Hello, everyone, and welcome to the SBI Securities Weekly Wrap podcast. So, first, let's discuss how the markets have been in the week gone by. The long awaited reciprocal tariff were announced by President Trump this week, sending shockwaves across asset classes from equities, bonds, currencies, and commodities. The US administration imposed a baseline import tariff of 10% on all countries. In addition to this, nations running large trade deficits with USA and having high import tariff on US goods were subjected to a higher rate. Major exporters to the USA such as China, EU, Japan, Korea, Vietnam, Thailand were slapped with tariff of 34%, 20%, 24%, 25%, 46% and 36% respectively. The tariff on India was set at 26%, relatively lower than its Asian peers, leading to outperformance of Indian equity market this week compared to its global peers. इस सप्ताह इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस ने करीब 2.6% की गिरावट देखी, which was weighed down by 8.4% sell-off in the IT index. IT sector tumbled on rising probability of recession in US, which contributes significantly to the sector's revenue. Globally, the US market witnessed a bloodbath post the announcement of tariff, with majority of benchmark indices entering bear market territory. The Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 and Russell 2000 fell 2.5%, 4.5%, 3.3%, 5.6% till Thursday. The US markets continued their bloodbath on Friday as China has imposed retaliatory tariff of 34% on US exports to China, further escalating the trade war. Canada too announced 25% tariff on US automobiles. More countries such as Japan, Korea, EU are expected to announce countermeasures in the coming week. Asian indices also saw a sharp correction this week, with Japanese Nikkei down by 9%. The dollar index sold off rapidly, now trading below the 102 level, while the US 10-year yield broke the 4% level on rising recession fears in US. Brent crude tumbled to below $70 per barrel on growth concerns and rising output guidance by OPEC+. The provisional updates from banks and NBFCs were better than expectations, leading to outperformance of the sector this week. Aspects to look out for next week. अगले हफ्ते इंडियन इक्विटी मार्केट बंद रहेगा गुरुवार के दिन, जो कि 10 अप्रैल है, ऑन ओकेजन ऑफ महावीर जयंती. The RBI MPC will announce its interest rate decision on Wednesday, where a 25 basis repo rate cut is expected by the market. The 4Q FY25 earnings season will also begin next week, with IT bellwether TCS set to announce its numbers on Thursday. Investors should lengthen their investment horizon and diversify their portfolios in the current market environment. While the near-term volatility is a concern, sharp correction in commodity prices along with drop in the local bond yields is positive for Indian equities in the medium term. अब बात करते हैं कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स पे. पहला स्टॉक है जुपिटर वैगन्स. इस कंपनी ने लैंड एक्वायर की है ओडिशा में फॉर अ रेल व्हील एंड एक्सल प्लांट, और इस कंपनी करीब 2,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इन फेज डेवलपमेंट ऑफ द फैसिलिटी. So positive for Jupiter Wagons in long term. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. इस कंपनी ने करीब 23,000 का टर्नओवर अचीव किया है FY25 में, जो कि 16% हायर था YOY, और एक्सपोर्ट सेल्स भी करीब 14% हायर थे एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. ड्यूरिंग FY25 कंपनी ने करीब 18,715 करोड़ का नए ऑर्डर सिक्योर किए, विद टोटल ऑर्डर बुक स्टैंडिंग एट ₹71,650 करोड़. पॉजिटिव फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इन लॉन्ग टर्म. अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज. इस कंपनी ने करीब 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है फॉर इट्स 500 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स इन आंध्र प्रदेश. रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा. अगला स्टॉक है महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स. इस कंपनी को प्रेफर्ड पार्टनर फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ 2 रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ मुंबई अंधेरी वेस्ट में अपॉइंट किया गया है, और इसकी प्रोजेक्ट वैल्यू की कीमत करीब 1,200 करोड़ है. पॉजिटिव फॉर महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स इन लॉन्ग टर्म. अगला स्टॉक है कोल इंडिया. इस कंपनी ने अपने कोल के दाम ₹10 पर टन से इंक्रीज कर दिए हैं, ब्रिंगिंग द प्राइस टू ₹20 पर टन फ्रॉम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 16, और ये हाइक दोनों का अप्लाई होता है, नॉन कुकिंग एंड कुकिंग कोल को. पॉजिटिव फॉर कोल इंडिया इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म. अब चलते हैं ऑर्डर इनफ्लोज ड्यूरिंग द वीक पे.
सो पहला स्टॉक है डिस्कसिंग अबाउट द की ऑर्डर इनफ्लोस. सो पहला स्टॉक है L&T. सो इस कंपनी को करीब 2,500 से 5,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं इस सप्ताह फ्रॉम मल्टीपल क्लाइंट्स. अगला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इस कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से करीब 593 करोड़ का ऑर्डर मिला है. अगला स्टॉक है NBCC इंडिया. सो दिस कंपनी हैज सिक्योर्ड एन ऑर्डर वर्थ ₹167 करोड़ फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा. अगला स्टॉक है KEC इंटरनेशनल. सो इस कंपनी को करीब 1236 करोड़ का ऑर्डर मिला है. अगला स्टॉक है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल. सो इस कंपनी को 621 करोड़ का ऑर्डर मिला है इस सप्ताह. अगला स्टॉक है HBL इंजीनियरिंग. सो इस कंपनी को सेंट्रल रेलवेज के वहाँ से 763 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है. सो ये थे की ऑर्डर इनफ्लोज ड्यूरिंग द वीक. अब चलते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस फॉर नेक्स्ट वीक. सो फॉर की कॉर्पोरेट एक्शंस इन नेक्स्ट वीक, kindly refer to our weekly wrap report. The link to view the report is shared in the description box below. This was all about the weekly market podcast. Thank you for listening. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.